Hello, how's it going, guys? Welcome back to another podcast. And I am so happy about this performance. And I've got Ali. I literally begged this guy to come on again. I was like, nah, you have to come on, भाई. जिस तरह से last time पाकिस्तान को हम लोग hype कर रहे थे और जिस तरह से पाकिस्तान का आज collapse हुआ है, भाई ये conversation जो आज होने वाली है. अगर आप इस podcast को देखने वाले हो, क्योंकि आपको लग रहा है आपको analysis मिलेगा या आपको लग रहा है कि इसमें कोई आपको वर्ल्ड कप के बारे में कोई information मिलेगी, तो ये नहीं मिलने वाली क्योंकि I think this guy is just gonna run for 30 minutes और मैं तो यहाँ पे मजे लेने वाला हूँ इसके. But yeah. The end score 192, India chased it down in 30 overs. Ali, Pakistan 191 all out. In general, let's talk about this first. Before we get into any details, any kind of background, in general, what do you rate Pakistan's performance? What do you rate? What do you say they need to improve on, what they need to work on? तू जान के ये सवाल पूछ रहा है। तू जान के भाई, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब they just got destroyed man from all ends bro। बैटिंग भी नहीं हुई, बॉलिंग भी नहीं हुई। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ। Literally, bro, I have no words, but I have a lot to say. It's a very weird feeling, man. It's just बहुत disappointing था. I honestly didn't expect this. Like we said in the previous pod, I don't know किसने देखा होगा, लेकिन मैंने कहा था बस ये ना हो कि मतलब one sided game हो, मतलब थोड़ी सी fight हो, थोड़ा सा मजा आए. And not gonna lie, a lot of things I said on that podcast, I'm gonna take back today. A lot of the things. Okay. Do you want me to start my analysis of the But game? if I was to generally just say कि देख हुआ क्या I woke up, I was watching the game. Obviously there's so much hype behind the game, and I start watching 9 a.m. in the morning. I'm like, चलो भाई अच्छा game होगा. And suddenly Pakistan walk out, and first 2 overs they score 20, yeah, 617 or 20 something like that. I'm like, damn, this is a flat pitch. Pakistan's gonna score 350, and maybe India might स्ट्रगल टुडे. और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता जा रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि हाँ भाई आज ये पाकिस्तान का दिन लग रहा है, मुझे पाकिस्तान फॉर्म में लग रही है. द वे अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम उल हक ओपनड एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 overs until the first wicket fell. They were looking so good, and especially attacking जिस तरह से उन्होंने सिराज को अटैक किया. ऑब्वियसली स्पेसिफिक्स में हम लोग एक एक करके जाएंगे, बट फिर वो जो कोलैप्स हुई मुझे बिल्कुल समझ ही में नहीं आया क्या हुआ. So speaking, let's start with the Pakistan opening. I think good decision by India to ball first, जो कि I think most of the teams have done it at Ahmedabad. 4 out of the 5 tosses that have happened have decided to ball first, and there was only one instance where they batted first, जिसमें they lost the game as well. So clearly shows that भाई bowling पहले करो, फिर उसके बाद when you get the team out on an early wicket, you can kind of pace yourself better in the second innings, something that you might not be able to do in the first one. So भाई opening partnership की बात करी जाए तो इमाम उल हक and अब्दुल्ला शफीक, two very strong individuals. इमाम उल हक को obviously last time उन्होंने बहुत कुछ बोला था, but आज कहीं ना कहीं somewhere we saw नहीं नहीं that नहीं, fight in तालियां him. तालियां Yeah. बनाओ कि भाई पहले ओवर से आगे गया ये बंदा। 38 बॉल्स खेला भाई, मुबारक हो इस बंदे को। उसमें भी 36 बनाया ये बंदा। टेस्ट मैच खेलना है भाई, इसके लिए तो सबसे पहले तालियां मैं कहता हूँ, ठीक है। आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू मेक एनीथिंग ओवर 10 रन्स। लाइक आई सेड, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू इवन मेक लाइक गो फास्ट ओवर फर्स्ट ओवर। ये भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। अब्दुल्ला शफीक ने नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसको क्या ही आप कह सकते हैं, जस्ट कमिंग ऑफ अ सेंचुरी। तो आई थिंक ऑनेस्टली लाइक जो भी होता आ रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सही, इवन दो वी जस्ट प्लेड 2 गेम्स, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। Our opening lineup seemed fine. Like Abdullah Shafiq जल्दी out हो गया, but Imam still scored whatever decent score. Babra Azam ने 50 किया. It's a respectable score, and Rizwan scored 49. ठीक है, good मतलब opening. ठीक है, उसके बाद you expect the middle order to come in and clutch it. ठीक है, we have Saul Shakil 6 run पे out. This is where the inexperience is coming in. जहाँ pressure आ गया, मतलब the fans, the India only kind of pitch पे जहाँ सिर्फ इंडियन फैंस ऑलमोस्ट हैं बेसिकली। आई थिंक दैट प्रेशर इज गेटिंग टू देम। मतलब 6 रन बनाए उसने सिर्फ 10 बॉल में। एंड देन इफ्तिखार चाचू, क्या क्या कर लिया है भाई ये। मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आ रही है, इस गेम में उसने भी चोक कर लिया, लेकिन चलो ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो। ही इज बीन परफॉर्मिंग वेल, एक मैच नहीं अच्छा खेला। एंड देन द सो कॉल्ड, all trying to control my language here, but the so-called all-rounders in our team, शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज, इसको आप ऑलराउंडर कहते हैं भाई। ये क्या परफॉर्मेंस है। मतलब 2 रन पे शादाब खान आउट। हमारे वाइस कैप्टन है भाई, किधर से वाइस कैप्टन है, क्यों वाइस कैप्टन है। उनको लगा पीएसएल में कैप्टन बन सकता है, यहाँ पे भी इसको कैप्टन बना दो, ठीक है। रिजवान को होना चाहिए, शाइन को कैप्टन होना चाहिए, इवन दो शाइन इज नॉट परफॉर्मिंग, लेकिन विल गेट इनटू दैट एज वेल। मोहम्मद क्या कहते हैं, रिजवान कह रहा हूँ, नवाज also scored 4 runs भाई। इस बंदे का मुझे अभी तक नहीं समझ आया टीम में क्या मतलब। there's so many players in this team that just don't make sense to me what they're doing, right? हसन अली मतलब
of course he's not a batsman, but I feel like he really shouldn't have played that shot Jadeja ke upar. If he stuck around, I think we could have gone to that higher 230, maybe even 250, bro. Honestly, Hassan Ali just, I don't know, he choked that game as well. Of course, Shaheen Shafidi, not a batsman, but अच्छा खेल लेता है. I think उसको थोड़ा आगे भेज सकते हैं हसन अली के पहले. Haris Rauf, of course, not a batsman either. So I feel like last podcast I said, Babar Azam बहुत pressure लेके खेलता है कि भाई उसको, he should trust his players. भाई, I want to take that back. Don't trust the players, man. Don't trust. भाई मतलब now I can see why he's playing under so much pressure. उसको पता है कि भाई अगर वो नहीं है, और लेट्स सी रिजवान से नहीं खेला जाता पीछे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर एक दो विकेट गई बस खत्म गया. बिकॉज हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं वो ऑलराउंडर्स नहीं है भाई. वो तो बॉलर्स में नहीं है, वो तो बस एम ही टीम में उनको डाल. शदाब इज आउट ऑफ फॉर्म, बट नवाज आई डोंट नो व्हाई इज इन द टीम. ठीक है, तो उसके अलावा बॉलिंग के बारे में क्या ही बोल सकता हूँ भाई. मतलब मुझे लगा 191 स्कोर है, लेकिन आई स्टिल, मैंने उसको टीवी बंद नहीं किया था. मैंने कहा पाकिस्तान की बॉलिंग आज क्लच करेगी. आते ही रोहित शर्मा जी ने छक्का कहना चौका मारा. मैंने कहा भाई आज तो नहीं छोड़ेगा ये बंदा. Bro, Rohit Sharma, what a captain and what a player. Honestly, man, you gotta give it up for him. Like उसको, मतलब जब बंदा कहता है कि 191 चाहिए 50 ओवर मैच में, तो आप कहते हैं चलो भाई आराम से खेलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई जल्दी आउट नहीं. उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो शाइन को प्रेशर में डालना है. आते ही चौके उसने छिड़काने शुरू कर दिए. ठीक है. एंड शुभमन गिल भी फॉर्म में आ रहा था. ऑफ कोर्स ही इज कमिंग ऑफ एन इंजरी, बट आई थिंक वो भी चौके की बरसात शुरू कर रहा था भाई. अगर उसको आउट नहीं करता व्हेन ही दे डिड, उसने नहीं छोड़ना था आज, मैं बता रहा हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स विराट कोहली अंडर परफॉर्म टुडे, बट ही डिडंट रियली नीड टू परफॉर्म. उसके अलावा बहुत गंदी पूर बॉलिंग हो रही है हमारी टीम की तरफ से. ऑफ कोर्स शाइन टुक लाइक 2 विकेट्स, हसन अली टुक 1 विकेट, बट दैट्स नॉट रियली, क्या फायदा हुआ उसका, राइट? वी नीड, मतलब ये शदाब से कब परफॉर्मेंस आएगी, नवाज से कब हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस आएगी. तो बस bro, क्या ही कह सकता हूँ इस टीम के बारे में. क्या ऑनेस्टली लाइक. भाई 7 मिनट के अंदर इस बंदे ने पूरी मैच की समरी दे दी है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द हाँ पॉडकास्ट. नहीं भाई, मेरा दिमाग नहीं. घूम गया यार. It's like just watching, like looking at the score back, like what is his performance? And bro, it's not even, can you even really blame the players? Like भाई ये, मतलब ये टीम बनाई हुई क्या है? I said this before, इतनी इनएक्सपीरियंस नहीं टीम में अच्छी होती भाई. मतलब अब्दुल्ला शफीक ने उस दिन प्रेशर ले लिया, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से नहीं प्रेशर लिया जाएगा. मतलब उस दिन, कल तूने मुझसे, कल नहीं, जब भी हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, तूने पूछा कि भाई कि क्या टीम सिर्फ बाबर और शाहीन पे डिपेंडेंट है? नहीं, बाबर और रिजवान पे खाली डिपेंडेंट है. मतलब अगर उन दोनों ने अच्छी बैटिंग नहीं की तो टीम है ही नहीं भाई. अगर आज आज रिजवान मतलब नहीं खेलता, नहीं परफॉर्म करता, तो टीम का इससे भी बुरा हाल होना था भाई. रिजवान के बाद क्या स्कोर बना है? बाबर ने भी 50 किया. आई थिंक बाबर could have performed a little bit better. He could have, just stuck around a little bit. Siraj surprisingly छाया हुआ था भाई वो. Like I said, and even I said in the last podcast, Kuldeep Yadav shining again. This guy's been on form. Pandya, I think he got like 2 wickets, right? 2 wickets, 3 wickets, Yeah, yeah. 2 wickets, right? 2 wickets. Hmm. Jadeja, as usual. This guy's overall, man, just Pakistan. It's just completely one-sided game, to be honest. मतलब, there wasn't a single. Actually, last podcast में तो जो कहा था कि either Pakistan's gonna choke or India's gonna choke. Hmm. पाकिस्तान ने चोक कर दिया भाई. मतलब 100% चोक कर दिया. I mean, they were playing well. अच्छा स्कोर जा रहा था. एंड जैसे ही हमारे ओपनिंग बैट्समैन गए, बस खत्म. जस्ट द टीम फेल अपार्ट एज यूजुअल. द पाकिस्तान डिड अ पाकिस्तान, लाइक वी लाइक टू से. या भाई ने मैन. मेरी मेरी स्टोरी की लाइन लेके यहाँ पे ऐड कर दी है, जस्ट टू टेक क्रेडिट फ्रॉम 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 मी. बट भाई, गोइंग बैक टू द पॉइंट अबाउट द पाकिस्तानी ओपनर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, द वे दे वर अटैकिंग सिराज, आई थॉट दे केम हियर विद एन इंटेंट. और उससे पिच जो जिस तरह से लग रही थी टॉस से पहले, वो लग रही थी कि भाई ये पिच बनाई गई है एक बिग इनकाउंटर के लिए, कि भाई पाकिस्तान 350 बनाए, इंडिया 350 चेस डाउन करे, और एक टफ फाइट हो और एंड तक गेम चलता रहे. वो लग रहा था. दैट पिच डिड नॉट हैव एनीथिंग इन इट. जब बुमराह ने पहली बॉल डाली, उसमें जीरो बाउंस थी, जीरो स्विंग थी, जीरो नथिंग. आई वाज लाइक स्ट्रेट गई थी बॉल एग्जैक्ट सेम. तो लग रहा था कि भाई आज ये पिच में 700-800 रन बनेंगे कलेक्टिवली. बट द वे दे स्टार्टेड स्कोरिंग, वो स्कैरी हो गया था इंडिया के लिए. एंड फॉर सिराज टू पिक अप दैट फर्स्ट विकेट अबाउट अब्दुल्ला शफीक. उसके बाद भी बेस्ट पार्ट ये था कि जब बाबर आजम आए, पाकिस्तान वर कंपोज्ड. कभी लगा नहीं, एटलीस्ट विद इमाम एंड बाबर आजम बीइंग देयर, कहीं से लग नहीं रहा था कि these guys are ready to give up already. And then same happened. Imam went out and Rizwan के साथ भी यही हुआ. Rizwan came and then it was still kind of a partnership was building between each other. दोनों ने काफी अच्छा खेला for a few couple of overs. Both putting up almost 100 kind of partnership mark over here. और फिर जब आप as a team 155 for 2 होते ना उस स्टेज पे,
where Pakistan were before that collapse started to happen. As an Indian fan, मुझे लगा कि भाई ये 350 से पहले तो नहीं कम करेंगे, क्योंकि projected score उस टाइम पे 300 था, and they were going a little slow. I thought कि भाई थोड़ा सा इनको pace pick up करनी पड़ेगी, but I was like कि नहीं, at least पाकिस्तान को they're aware कि भाई they have another they had like 20 overs remaining. I was like ठीक है, अभी 20 over है इनके पास, they have 8 wickets, तो what they should do भाई calmly खेलो, end में जाके attack कर लेना, लास्ट 10 ओवर्स में मे बी 70 80 90 ट्राई कर लेना करने की, चलो जस्ट टू सी, बिकॉज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नॉट नोन फॉर देयर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले, 80 90 स्ट्राइक रेट रहती है, और आज भी वही दिखा, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स 70 80 पे एवरेज रहे, बहुत ही कम ऐसा हुआ. तो समवेयर दैट कोलैप्स व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग, ऐसा कि कर क्या रहे पाकिस्तान, इट इज भाई ये काउंटी क्रिकेट में नहीं होता है. आप वर्ल्ड कप तो छोड़ दो, बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस में होता है ऐसा कि भाई सडनली विद इन 36 रन्स Pakistan went from 155 for 2 to 191 all out within 36 runs. So it just goes to show that when you put them under pressure, they just collapse. And ye pressure maybe Netherlands ya what was the other game? Netherlands ya Sri Lanka. Both were not able to put under Pakistan, which is why they were able to chase it down. Of course, I think expectations इसलिए भी बढ़ गई थी पाकिस्तान से, क्योंकि they just came from chasing 330 runs against Sri Lanka, who are not a bad side. वो ground भी कोई ऐसा ground नहीं है जहाँ पे runs बहुत आसानी से मिलते हैं. हैदराबाद is one of the toughest spin grounds to play at. So And to see, Sri Lanka isn't really known for their bowling, are they? I mean, they have probably one of the worst bowling lineups this World Cup, I'd say. I mean, अगर आप उनके lineup को देखेंगे compared to India's lineup, India के भाई हर bowler ने wicket लिया है. And then you look at their India's bowler and look at our bowler, भाई इनके spinner wicket ले रहे हैं, आपके सिराज wicket ले रहा है, बुमराह wicket ले रहा है, कुलदीप यादव, सिराज मतलब जो लास्ट मैच से नहीं खेल रहा, तूने कहा था फॉर्म में नहीं है, अभी देखो भाई विकेट आके उसने ले लिया. बुमराह खेल रहा है, ठीक है. हार्दिक पांड्या वो खेल रहा है भाई. मतलब हमारे एक दो पे आप रिलायंट हो, किसी पेस बॉलर पे रिलायंट हो, हमारे स्पिनर्स कहाँ हैं भाई? हमारे स्पिनर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ उनसे हो ही नहीं रहा है. तो मतलब आई फील लाइक पाकिस्तान को जो टीम, मतलब अगर आप ऑलराउंडर देखो, ठीक है, मतलब इंडिया हैज हार्दिक पांड्या, इंडिया हैज इवन जडेजा, आज से लाइक ही इज अ रियली गुड ऑलराउंडर, ठीक है. देन यू लुक एट पाकिस्तान ऑलराउंडर, वी आर कॉलिंग शादाब एन ऑलराउंडर, ब्रो कम ऑन. मतलब इससे कहाँ ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब यू नो कि अगर इंडिया लेट्स से दे जस्ट चोक द होल गेम, पूरी टीम आउट हो गई है, जडेजा और पांड्या बचा है, यू विल स्टिल बी ओके भाई, हमारा बंदा बचा है. अब मेरा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बचेगा शादाब नवाज, हम टीवी बंद कर देंगे भाई, हमें पता है कि आगे आना. तो वही हुआ पाकिस्तान, मतलब जैसे ही हमने मार खाना शुरू किया, मैंने टीवी बंद किया, मैंने कहा भाई कोई देखने का तो फायदा है नहीं. मतलब व्हेन आई सॉ देयर वाज लाइक 120 नीडेड इन लाइक 40 ओवर्स, मैंने कहा गए भाई. और मतलब रोहित, मतलब अगेन रोहित शर्मा जैसा ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा पाकिस्तान में. उस तरह के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मतलब सिवाय बाबर रिजवान के कहीं नहीं है. मतलब उसकी आईक्यू देखो, मतलब प्रेशर नहीं लिया उसने, मतलब बड़े ओकेजन को देख के नहीं कि मैं आराम से खेलूंगा, अपनी 50 100 बनाऊंगा, टुक टुक करके खेलूंगा. उसे कहा नहीं भाई, मैंने शाइन को प्रेशर में डालना है एज ए कैप्टन, कि मैं इसको एग्जैक्टली वही मैं प्रेशर, कहने जा रहा था, मैं वही मैं इसको कहने जा प्रेशर. रहा था कि रोहित का एम ही यही था. एंड आई थिंक कमेंट्री बॉक्स में भी बहुत बार इन लोगों ने यही कहा था कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को अननेसेसरी रिस्पेक्ट कभी कभार मिलती है फ्रॉम टीम्स, एंड दैट्स बिकॉज उसकी रैंकिंग देखते हैं लोग कि भाई नंबर 1 नंबर 2 बॉलर है, हाईली रैंक्ड है, उसकी जो यॉर्कर्स है बहुत डेडली हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, यू नो, विद स्पेशली विद द न्यू बॉल इन जनरल. तो उसको देख के बहुत सारे बैटर्स क्या करते हैं, एक शेल में चले जाते हैं, उसको एक रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और जब वो रिस्पेक्ट दो ना एक प्लेयर को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर चढ़ जाता है. वो यू विल नेवर बी एबल टू कम बैक फ्रॉम दैट. तो वो देन 10 ओवर्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बॉलर आर वेरी टफ टू प्ले if you survive the crease and if you stay there, or फिर it's most likely कि भाई आप उसी को विकेट दोगे. तो what Sharma did right off the bat was कि भाई Pakistan have one tactic right now, and that is to bowl Shaheen Shah almost 3-4 overs in a row on the opposite, and have was it Hassan Ali, I think they had on the other end, to start with, and they were like, if we don't attack one of these guys, they'll keep piling up pressure, and that's what Rohit भाई Sharma मतलब did नहीं, शर्मा from को भी, one end at least. शर्मा कह रहा हूँ, शाइन को भी अटैक किया और हसन अली को भी अटैक किया, Hmm. और शर्मा ने नहीं, गिल ने भी किया. ऑफ कोर्स गिल जल्दी आउट हो गया, बट आई फील लाइक जो उनकी कोऑर्डिनेशन आई थी, मतलब व्हेन दे वर कमिंग इनटू प्ले, दे वर लाइक इन पे प्रेशर डालना है, तेज तेज खेलना है. तो और वही हुआ, प्रेशर आया, और पाकिस्तानी जब प्रेशर पे आते हैं तो अजीब अजीब बॉलिंग डालते हैं, ये उनको और पता है. फिर साइकोलॉजिकली उससे भी फर्क पड़ता है कि भाई जब पाकिस्तान इज वॉकिंग आउट अ फील्ड एंड यू हैव गॉट सच अ लो टारगेट डिफेंड, 191 डिफेंड करना, एक वो मेंटली आपको पता होता है बैक ऑफ योर माइंड कि भाई गेम हारे हुए हैं, अब किस तरह से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जस्ट टू शो कि भाई दिस इज नॉट एन एम्बैरेसिंग लॉस बट जस्ट अनदर लॉस फॉर Right. पाकिस्तान. And I think to a certain extent we'll probably sit here and talk quite negatively about Pakistan and quite positively about India, but at the same time we both will have to somewhere realize कि भाई this is just another World Cup game, and Pakistan are highly likely to come back from this. This is just their first loss. You know, They've actually
I do want to disagree with that, to be honest. It is another game, of course. उसी तरह लेंगे, I'm sure पाकिस्तान की टीम भी, लेकिन think about this, ठीक है? This match shows where Pakistan's really at. मतलब हमने जो दो गेमें खेली, फर्स्ट नेदरलैंड्स और श्रीलंका को हरा के हम बहुत वो चढ़ गए कि भाई हम बहुत अच्छी टीम है, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंडिया टेस्ट था आपके लिए। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। इंडिया वाज अ टेस्ट के वेयर आर यू इन दिस वर्ल्ड कप, व्हाट इज योर स्टैंडिंग? आप टॉप 4 टीम है ही नहीं भाई। जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है, इस तरह की परफॉर्मेंस में आप टॉप 4 क्या, मतलब आपसे आगे मैं तो कहता हूँ श्रीलंका बांग्लादेश आएगा। जिस तरह की ये परफॉर्मेंस 190 स्कोर ओडीआई में भाई, मतलब क्या ये बहुत embarrassing है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रो। लाइक वी कैन laugh, we can smile, like obviously बंदा और कर ही क्या सकता है, राइट? लेकिन it's very embarrassing bro, like this I feel like this match shows where we're really at. Do you They think might, do you think it's more embarrassing because you were at stage 155 for two? हाँ, और would it, yes, अगर जैसे let's say अगर पाकिस्तान आज 100 पे रैप अप हो जाती, पहली हाँ, पहली बॉल से स्ट्रगल करते, would you be more angry at that kind of performance या फिर at this performance? I'd be, it's not even, I'm not even mad about Pakistan choking this game. I'm more mad about the score. But yeah, of course, I mean 100 पे आउट होना तो भाई मैं तो कहता कि बुला लो वापस, वीजा कैंसिल, बुला लो वापस भाई, फायदा नहीं है, Because जस्ट मेरे विड्रॉ लिए योरसेल्फ। मेरे लिए मैं जब देखता हूँ ना इस मैच को, मैं कहता हूँ दिस इज मोर एम्बैरेसिंग देन 100 पे ऑल आउट होना, क्योंकि आप पहली बॉल से आप स्ट्रगल कर रहे हो, समझ में आता है कि पिच मुश्किल है, आपको पिच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि आपको पिच की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि यू वर 155 फॉर टू, एंड देन यू सडनली डिसाइडेड वन आफ्टर अनदर कि लेट्स मेस अराउंड, और 191 पे आप ऑल आउट हो गए। एंड अ टीम दैट वाज प्रोजेक्टेड टू स्कोर ऑलमोस्ट 350 ऑन दिस पिच, या 300 भी चलो मान लो वर्स्ट केस सिनारियो, वो टीम 250 तक नहीं पहुंची, जो कि आई थिंक इन जनरल ओडीआईज में एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड आप बॉलिंग से बॉलिंग पिच, डेड से डेड पिच बना दो, उस पे भी 250 आपको चाहिए है डिफेंड करने के लिए। हाँ, अभी इंडिया ने आजकल किसको ओडीआई खेला में था? अफगानिस्तान, राइट? अफगानिस्तान ने कितना स्कोर किया भाई? 270 स्कोर किया अफगानिस्तान या ने। आज बिल्कुल। शर्म कर लो भाई, मतलब कसम से। दिस इज अ बिग वेकअप कॉल गेम। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भाई 300, तो इज्जत तो भाई बचा लो, इज्जत अगर हारना ही है वर्ल्ड कप तो इज्जत बचा के हारो भाई। 300 स्कोर तक तो जाओ, या 250 या 200 तो क्रॉस कर लो भाई। 190 क्या चल रहा है आप लोगों का? 190 T20 के लिए आजकल कम स्कोर है भाई, मतलब क्या खेल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। 30 ओवरों में इंडिया ने खत्म कर दिया, और वो भी भाई मुझे लगता है कि अगर गिल जल्दी आउट ना होता या विराट कोहली जल्दी आउट ना होता, इससे भी जल्दी बन जाता स्कोर। मुझे लगता है 25 में रैप अप हो जाना था पाकिस्तान का ये गेम, लेकिन yeah man, it's very embarrassing and it is a big wake up call. Of course Pakistan can come back from this, lekin I don't know how they're going to do it. They have to change something. I think we need performances from the opening lineup, the middle order, and our all-rounders, bro. Like all of them, they all need to perform. They all need to show up. ये नहीं कि भाई आज बाबर अच्छा खेल रहा है हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, नहीं भाई। आपको और बॉलिंग भी, you have to be on point with the bowling. मतलब don't get under pressure. You're getting hit, it's fine. मतलब लेकिन again अगर आपको स्कोर इतना लो है तो आप प्रेशर में आएंगे। What can you even do about that? लेकिन again bro, yeah, I think it's a big wake up call. Hopefully ऑस्ट्रेलिया के बट खिलाफ मेरा ये, मेरा मेरे साथ वही होता है ना, द डाउट दैट इज क्रिएटेड इन माय माइंड इज कि भाई डू आई थिंक अगर पाकिस्तान लेट्स से चलो ठीक है टॉस हार गए थे, मे बी दैट्स वन बिग एस्पेक्ट एज वेल, बट अगर मैं सोचूं और मैं रिवाइंड करूं इसको, मैं कहूं कि अगर पाकिस्तान ये टॉस जीत भी जाता एंड दे वुड हैव चोज टू बॉल फर्स्ट, would they have been able to restrict India for 200, 250, maybe 300? And then if they would have done that already, would they have been able to chase that down against an Indian bowling lineup like this? I don't think so. I personally think when Pakistan came into this game, irrespective of whatever their form was against Sri Lanka or Netherlands, वो I guess mentally ready नहीं हो पाते इंडिया को खेलने के लिए, फेस करने के लिए। वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड क्या है भाई? 9 गेम्स खेले, 9 के 9 हारे लास्ट व्हाट इज सो मेनी इयर्स। T20 वर्ल्ड कप में एक गेम जीते आई थिंक इन आउट ऑफ 9 या 8 गेम्स, 9 गेम्स में से 8 इंडिया जीती है, एक पाकिस्तान जीती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आई थिंक India's won 4 या 5, and then the only one that they've won, obviously a big one, the final itself in 2017. But somewhere you have to think कि भाई पाकिस्तान में या तो दे टेक प्रेशर टू इजीली, ठीक है आपके पास फैंस नहीं है आपके, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंट, होम कंडीशंस इंडिया के लिए फेवरेबल है, बट अब फाइट तो पुट अप करो, मेक इट सीम लाइक फॉर 8 hours that you fought well. No one's saying that I guess no one's saying that we want to see a dominant performance from Pakistan. But अगर 300 scoreboard पे होता है and India would have chased that down, we all would have sat here today clapping our hands saying कि भाई क्या गेम देखा है हम लोगों ने, इंडिया ने भी बहुत जबरदस्त खेला, पाकिस्तान ने भी खेला, और एंड में जो थोड़ा बेहतर था वो जीता, 19-20 का डिफरेंस था। बट वो हो ही नहीं पा रहा है in most of those cases. So talking individually, I think about Babar Azam specifically here, a string of bad kind of scores from the Asia Cup, 90 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के against that in that warm up. But are we to say Babar
Babar Azam's back, maybe we'll see more of these innings and maybe a century or two in the next few games. But अभी 7 games बाकी हैं Pakistan के लिए, and there are quite a few important games where the captain's gonna have to step up and score a few runs. भाई ऑनेस्टली बाबर के ऊपर तो और भी ज्यादा प्रेशर है ना, मतलब वो क्या करे बेचारा, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक अब उसको ये पता है कि भाई मैं आउट हो गया तो कुछ है ही नहीं पीछे, सच में कोई नहीं है, मतलब इवन बिफोर आई सेड ना प्रेशर लो, लेकिन भाई उसके पास क्या ऑप्शन है? उसने अपनी लाइनअप ही देख ली, उसने अपनी टीम देख ली है भाई कि क्या करेंगे लोग। लेट्स से रिजवान डजंट परफॉर्म, बस खत्म, मतलब रिजवान आउट हो जाएगा, बस टीम खत्म भाई। क्या इफ्तिखार कभी परफॉर्म करेगा? कभी नहीं करेगा। शादाब और नवाज को तो भूल जाओ कि वो बैटिंग में आके कुछ परफॉर्मेंस देंगे, तो सऊद शकील माइट कम इन क्लच और समथिंग, लेकिन आई थिंक बहुत प्रेशर है बाबर के ऊपर। आई वोंट से he's out of form or he's in form. I think he's just playing regular. He's playing a decent game. 50 run, not the best score, not the worst score. It's okay. It's a good score, decent score. जो बाबर ने किया, I think hopefully against Australia he comes in and does well. Last week जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में 90 जो मारा था, स्टीव स्मिथ बॉलिंग डाला था भाई, तो उसको तो अब ना ही काउंट करें। 90 को हम लोग उसके बारे में नहीं सोच सकते ज्यादा। लेट्स होप कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वी कम एंड वी बैट वेल एंड वी बॉल वेल तो मुझे अभी उम्मीदें जा रही हैं पाकिस्तान से कि they're gonna ball well. Bat well, we've done a few games in this World Cup, but against very bad teams, to put in a nice way, right? Bad bowling side. तो इंडिया जब अच्छी bowling लाइनअप आई, we just completely fumbled the bag there. But लेकिन अब स्टार्क आएगा, मैक्सवेल आएगा, मतलब अब देखते हैं कि खिलाफ हमारी बैटिंग कैसे मैचअप करती है। और बॉलिंग I'm not really too confident with right now. I don't think wickets आ रही हैं, and I think it's going to be I think the best move for Pakistan, if they do win the toss against Australia, would be to bowl first, and then just chase, because we can't rely on our bowlers at the moment to win us the game. Win the game to छोड़ो, they're not even putting up a fight almost. It's like they're giving up. इतनी गंदी बॉलें डाल रहे हैं, they're just getting smacked all around. Overall, yeah, man, that's my thoughts. I think Australia को हराना is like they have to be Australia. I don't care what the stats say, they have to be Australia. And not just like struggle. I think they have to put up a very good performance against Australia. ये नहीं कि dominate Australia, आप मतलब अपने आप को क्या समझते हैं आप ऑस्ट्रेलिया को dominate करेंगे, लेकिन just put up a good performance कि भाई respectable हो, कि ये नहीं कि सिर्फ बाबर ने आके रिजवान ने आके 200 स्कोर करके जिता दिए मैच, मतलब we need a consistent You overall want to see a performance. team performance that Yeah, way. a team performance, exactly, Hmm. bro. That's the thing. That's the thing. And it's shocking because I thought about saying this in the last pod, but I think it makes more sense now. जब भी बाबर perform करता है, the team falls apart, bro. I don't know what it is. Like even in the Australia match में आप देखो 90 score किया, the team fell apart, right? Like Yeah. whenever Babar does well, the team's like नहीं भाई हमें जरूरत ही नहीं है, and they just fall apart. So is it like should Babar do well? Should Babar not do well? Like ये भी नहीं पता भाई. लेकिन I think yeah, I think they all need to do well. Again, Imam, I'm not gonna trash his last performance. Just keep doing what you did in the last game. Hopefully, put up a little bit more score. और अब्दुल्ला शफीक थोड़ा aggressive खेले. आई थिंक वो थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ा सकता है, बिकॉज इमाम टेस्ट प्लेयर है भाई, वो तो टेस्ट प्लेयर की तरह ही खेलेगा। तो अब्दुल्ला शफीक नीड्स टू कम इन, बट वो भी प्रेशर नहीं ले, ही नीड्स अ गुड स्कोर। 20 रन से नहीं बनेगा भाई, एक 20 हो गया बस ठीक है, सेंचुरी बनाई, we're just gonna let that game go for him, लेकिन he needs to come back and he needs to perform. But yeah, hopefully Rizwan performs again, Babar performs again, our opening lineup does well, Imam expectations तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इमाम भी शो अप करेगा, and hopefully our bowlers do well. But yeah man, that's Irrespective, yeah. irrespective of Pakistan's form and everything, talking about that Australia game that's about to come up for them, I think generally Australia का form देख के कोई कह नहीं सकता कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल या आसान गेम होने वाला है. I think Australia do play Sri Lanka obviously before that, so that might be a good option for the good kind of chance for them to regain form. But वो match एक ऐसे stadium in Lucknow में where it's a heavily bowling heavy pitch and it's a heaven for spinners, so something Australia might lack again. But realistically, let's say Australia वो जीत भी जाता है श्रीलंका के against game, पाकिस्तान नीड टू गो इन दैट गेम एंड से कि भाई ये वही ऑस्ट्रेलिया जो अभी 2 गेम्स बहुत बुरी तरीके से हार के हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला वाला गेम और फिर इंडिया के अगेंस्ट भी ऑब्वियसली, और इररिस्पेक्टिव ऑफ वो श्रीलंका का क्या रिजल्ट आता है, पाकिस्तान शुड गो इन देयर एंड से कि भाई दिस इज आवर गेम, वी हैव टू विन दिस, वी हैव टू टेक 2 points away from this. And because if Pakistan are able to do that, suddenly their games against Afghanistan, Bangladesh, and I think Pakistan haven't played Sri Lanka as well, so I think those games become really easy for Pakistan. And फिर जब वो easy हो जाएगा ना, फिर वो एक cycle बन जाएगी, and that's how they can regain form. But moving back a bit, just to talk about India individually, I guess, and play some of the players again. By Rohit Sharma, I think I know a lot of people are going to call him a World Cup merchant and say कि भाई World Cup perform करता है, but that's when it matters the most. This guy has the most sixes in World Cup history. This guy has hit 5 sixes consecutively over the last 5 matches, which has never been done by any other World Cup
Cup player. He's got more centuries than any World Cup player ever. He's broken Sachin's record. He's broken Brian Lara's record. This guy is one of the best openers. भाई अगर मुझे ODI team बनानी हो और उसमें opener कोई pick करना हो, obviously that is going to be one of the first names I put down on the list. और उसके साथ best part ये है, the day he has his timings right, he will whack you all over the course. आपके सामने कोई भी हो, वो मोर्ने मोकल हो, आपके सामने मिचेल स्टार्क हो, आपके सामने पैट कमिंस हो, शाइन शाह हो, एनीवन, भाई कोई नहीं बच सकता रोहित शर्मा से जिस दिन उसकी टाइमिंग सही हुई. एंड दैट्स व्हाट आई सॉ टुडे. भाई जब उसने पहले 2 चौके मारे, मैंने आई लुक्ड एट माय ब्रदर एंड आई वाज लाइक दिस गाय इज गोना गो berserk टुडे. वही अफगानिस्तान के साथ भी देखने को मिला था. ही लिटरली वेंट berserk एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ हिम. आई थिंक शुभमन गिल एंड both Rohit Sharma have the capability to, I guess, control the innings well. And what I mean by that is, when required, आप धीरा खेलो. जब आपको पता है आपको दूसरे ऑपोजिशन को प्रेशर में डालना है, आप अटैकिंग खेलो. और आज दोनों वैसे ही खेल रहे थे. 136 की स्ट्राइक रेट से 86 बनाना इज नॉट एन इजी जॉब. और वो भी जो शॉट पे आउट हुआ था, आई वुडंट से कि भाई चलो बहुत ही, मतलब इट वाज इन लाइक द बेस्ट. इट वाज अ रियली गुड बॉल. तो इट मेड सेंस कि ठीक है, मे बी could have played it a bit different, maybe he could have been a bit केयरफुल ऑफ हाउ ही डज इट. बट वो एक, जब आप एक जोन में होते हैं ना, अटैकिंग जोन में, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बॉल भी मैं मार सकता हूँ, ये बॉल भी मार सकता हूँ. तो दिस नो वे दैट आई कैन सिट हियर एंड कंप्लेन अबाउट रोहित शर्मा. एंड जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शंस आती है रोहित शर्मा के लिए, तो भाई इस वर्ल्ड कप में आई थिंक मे बी नॉट, ही डजंट ब्रेक हिज ओन रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोर देन 6 सेंचुरीज. अभी भी वर्ल्ड कप भाई काफी बाकी है, 7 गेम प्लस सेमीफाइनल फाइनल. इफ ही डज प्ले दैट, I think even if he doesn't break it, he'll get out of this World Cup as one of the star players for India. And I think he'll be quite impactful. And I would have said Shubman Gill would have been that player, but he's been recovering from a disease, and it's a disease that takes time to recover. I know a few people who take almost a month to do it. So for me to even see him on the field 2 weeks, 2.5 weeks after that kind of disease, it's quite commendable that he's managed to recover that quickly as well. And by Indian bowling, you've talked about it so much and you've praised it so much. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, बट भाई बुमराह भाई क्या बॉलिंग करा रहा है वो इस बस मुझे वही एक कंसर्न है, अगेन जैसे उन्होंने लास्ट टाइम बोला था सिराज. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा क्यों इतना बैक कर रहा है सिराज. आई थिंक व्हाई टेक द रिस्क. भाई आप उसको एक गेम बाहर बैठाओ, शामी को ट्राई, क्योंकि द लास्ट थिंग यू वांट इज सिराज टू प्ले ऑल द की गेम्स. पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो खेल लिया, अफगानिस्तान, आई वुडंट काउंट अफगानिस्तान एज मच सो, बट फिर शामी इन द बैकग्राउंड उसका कॉन्फिडेंस गिरता रहेगा और आप उसको ट्राई ही नहीं कर रहे हो. और उसको भी तो भाई थोड़ी चांसेस चाहिए होंगी जस्ट टू गेट हिमसेल्फ फेमिलियर विद द कंडीशंस, फेमिलियर विद द पिचेस, कि भाई कल को फाइनल सेमीफाइनल में उसको आपको लाना पड़े तो वही हो. क्योंकि आई I think रिमेम्बर next game is a perfect game to bring him in, एग्जैक्टली man. Against Bangladesh, right? एग्जैक्टली हाँ. I think it's a perfect game to bring him in. I think he'll do well, and I don't think okay, let's say he doesn't perform well, you'll still have Bumrah and all these guys to back him up, because Bangladesh, I don't think they're gonna put up much of a fight, to be very honest. They might put up more of a fight than Pakistan. You'll be But surprised. Bangladesh actually has a really good record against India. Bangladesh has won more games against India than India has won against Bangladesh. Oh, really? Yeah, in major tournaments. That's surprising. Yeah. So the joke's on Pakistan here. Yeah, Pakistan, man, there's just something about I think even if that game was in Pakistan, we would have still lost. We would have lost probably और भी गंदा इससे, और भी प्रेशर लेते हैं, और भी गंदा आते हैं भाई कसम से. मतलब बहुत दिमाग खराब हो गया. मैंने पूरी गेम देखी नहीं ना, जैसे मैंने बोला. मतलब मैं क्या एनालाइज करूं. हमने बॉलिंग, मैंने शुरू में आके देखा कि चौका चौका, मैंने कहा, और छक्का जो मारा था रोहित शर्मा ने शाइन को, मैंने कहा, मेरा दिमाग घूम रहा था. मैंने कहा भाई शुभमन गिल आउट हुआ, फिर मैं थोड़ी होप बनी. फिर मुझे याद आया कि इंडिया है भाई, कोहली भी है, राहुल भी है. अभी तो पूरा दूसरे प्लेयर का क्या नाम है यार, दिमाग से जा रहा है, जिसने अभी 50 किया है, थिंक उसने. श्रेयस अय्यर, श्रेयस हाँ अय्यर. हाँ हाँ, वही वो भी है भाई. मतलब अभी पांड्या भी है भाई. ऑलराउंडर्स भी तुम टीम ने भरे हुए हैं भाई. मतलब इंडिया, if India was to lose that game, that this is why I predicted that they're going to win. If India was to lose that game, they'd have to choke so bad, because perfect team India की. I think this might be India's World Cup to lose, to be very honest. I think No, I agree. I completely agree. Yeah. this is a perfect squad for India. I think India has to win home conditions. I think if India doesn't lose, it's a big choke from in their side. We have zero excuse. New Zealand is a big competition for you guys, but I think India is just a perfect team. New Zealand is good. India might win this whole thing, to be very honest. I completely agree. I think it'll be wrong to say that come the 14th of November, India can sit and say कि हाँ this we messed up here or we messed up there, क्योंकि इंडिया के पास कोई excuse नहीं होगा कि हाँ conditions ऐसी थी, ये थी वो थी, जो हम लोग
last few World Cup से सुनते आए हैं, there will be no excuse for India. भाई सारी pitches आप ही की बनी हुई pitches हैं, आप ही की trained pitches हैं, सारे players are familiar. भाई ये सारे players are regular IPL players. These guys play about 50 games a season in a year, kind of in Indian pitches, and practice in domestic cricket and international cricket. So somewhere you just can't let India have obviously pressure बढ़ता है उससे, but these guys are all capable of handling pressure. Just finishing up the point I made on bowling, I think Siraj and Shami being the obvious one. Other than that, really happy with the way the other bowlers bowl. A bit disappointed with Shardul Thakur. I think मैंने last time बोला था कि Hardik Pandya and Shardul Thakur will be two key bowlers for India in at Ahmedabad, क्योंकि वो pitch जो है उसमें bounce कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल ही bounce नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा bounce होती है, and in both conditions medium pacers benefit. मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद है, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर were two key bowlers in that England series, Australia series में भी अभी as well. So somewhere I'm just hoping that Shardul Thakur comes back in form, and उसकी बैटिंग तो इतनी देखने को मिली नहीं है बाकी सारे गेम्स में, the way India's top order has been playing, that we can't really complain and say कि भाई ये गलत है, ये सही है, वो whatever from that. But in the end of the day, भाई India Pakistan, it is what it is. It's been a very one-sided game, and I think the only hope I'll give Pakistani fans is कि भाई last time India defeated Pakistan in a 50-over match in a ICC trophy. Pakistan went on to win that tournament against India in the final in the Champions Trophy. So that's the only kind of hope I'll give all the Pakistani ये fans. सुपरस्टिशंस तो भाई पाकिस्तानी फैंस के ज्यादा चल रहे हैं और वो अपने पास रखे. आई डोंट थिंक दिस सुपरस्टिशंस हमें काम आएंगे. लोग कह रहे हैं नसीम शाह इंजर्ड हुआ, आई थिंक हमारा एक बॉलर 1990 पता नहीं कब की बात कर रहे हैं. भाई ये सुपरस्टिशंस अपने पास रखो. हमारी जो भी टीम लग रही है ये वर्ल्ड कप खेलने के लायक नहीं है इन माय ओपिनियन. लेट्स होप दे डोंट कीप अप दिस परफॉर्मेंस एंड they really do show up because again श्रीलंका नीदरलैंड्स को आप हरा के खुश नहीं हो सकते. उनकी बॉलिंग बहुत गंदी है, उनकी बैटिंग अच्छी थी, वो भी आपने मार खाई है. And yeah, we just really need to show up in our next few games to even make the top four. जीतना तो अभी आपको बहुत आगे तक जाना है जीतने के लिए. But yeah, amazing performance from India again. It was even as a Pakistani fan, it's amazing to watch Rohit Sharma just play great. It's just what we do, bro. It's just what we do. भाई मैंने नहीं आना इस पॉडकास्ट में अंदर से. भाई मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऊपर से तू बातें सुना रहा है. ठीक है भाई. I mean, yeah, it's just what India does, just show up, do the thing. तू लोग Not like बेटा we पागल आदमी. not like we're the pitch creators, not like we've organized the tournament. भाई नॉट मुझे लाइक funniest ऑस्ट्रेलिया में जो पिच मुझे थी अभी अलग पिच है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. उसमें तो मैंने बात भी नहीं की भाई. मैं तो अपनी टीम को ही नहीं, मुझे पता है सबसे फनी क्या लगा. उससे कौन पाकिस्तानी कोच कौन है, जो पाकिस्तानी कोच याद नहीं आ रहा मुझे नाम. He goes on to the press conference, or his first remarks on why he thought Pakistan lost that game was that he did not feel it did not felt like an ICC event to him, and he was like, this felt like a bilateral series where India was playing at home, because obviously by fan support India का बहुत ज्यादा था. और फिर उसके बाद ही वाज लाइक, बिकॉज पाकिस्तान के जितने भी जैसे गाने हैं या व्हाटएवर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दे माइट हैव गिवन द स्टेडियम बी लाइक कि भाई ये ऐसे इन सिचुएशन में ये चीज होनी है टू मेक श्योर. भाई एक होता है ना कि भाई व्हेन यू हियर जैसे दिल दिल पाकिस्तान, वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स एज वेल, when you hear that, वो एक प्लेयर्स को एक राइल अप करता है, it just gives it motivation. He was like, दिल दिल पाकिस्तान नहीं प्ले किया, that's why Pakistan lost. It was the most funniest thing in the world. I was like, भाई क्या सो कोच है ये स्टूपिड. बंदा. इट्स Like, सो how can you say something like that? I'll say कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता होगा, बट इतना नहीं करता कि आप 300 की प्रोजेक्शन से 491 पे ऑल आउट हो भाई जाओ. भाई इंडिया के पिच क्या कहते हैं सुपरवाइजर से एक स्पेशल वो करना चाहूंगा कि भाई दिल दिल पाकिस्तान लगाना ऑस्ट्रेलिया के मैच में. हो सकता है हमारा 300 के करीब ही स्कोर पहुंच जाए, और हो सकता है इमाम फिर से एक और से ज्यादा सर्वाइव कर ले. भाई कोई भरोसा नहीं है इस वर्ल्ड कप का. बहुत सारी वीक टीम्स ने बहुत अच्छा करके दिखा दिया, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग टीम्स ने डिसअपॉइंट किया है. One of them being England, and they play Afghanistan when you guys watch this episode. Delhi mein game hai, and I think the only thing I'm looking forward to in this game is seeing England's batting, how they line up against Afghanistan. Obviously, I think Ben Stokes returns as well, which is a big comeback for him, and a big kind of advantage for England. But Delhi ki ground mein, we saw South Africa score 428, we saw Sri Lanka score 350, we saw what's it called? India chased down Afghanistan's 270 in almost 30 overs, is it 35 overs? And even a team like Afghanistan scored 270 on that pitch. So it's a completely batting heavy pitch. So England will bring out all of their superpowers tomorrow and do everything in their power to score as many runs against Afghanistan and assert their dominance. By perfect opportunity उनके लिए भी. Last game वो जीत चुके हैं, 2 games हारने के बाद. I think it was their third game that they won.
if I'm not wrong. So I think for them it's the perfect opportunity to say कि भाई हाँ ठीक है हम लोग का form इतना अच्छा नहीं रहा है. Actually they played two, lost one against New Zealand, won one against Bangladesh. So perfect chance to regain that form against Afghanistan, who've been doing quite poorly. दोनों गेम अपने हार चुके हैं Afghanistan, bottom of the table. Any thoughts on that? Yeah, I think it's going to be, I won't say one-sided. I'm not going to discredit Afghanistan's team, but I think it's going to be one-sided. I think England's going to destroy them. I think England's just going to भाई let us see अफगानिस्तान की बॉलिंग ही goals. नहीं चल पा रही है. अगर बॉलिंग पिच में वो बॉलिंग नहीं करा पा रहे तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अफगानिस्तान टू डू एनीथिंग on a pitch like Delhi where teams have been scoring 350 plus every game. Anyway, batting, I don't think Afghanistan's gonna do very well that game. I think England is just gonna dominate them. Like you're saying, Ben Stokes is back. खत्म है भाई अफगानिस्तान का किस्सा. I think उधर ही. Exactly. For Australia though, on the 14th match, sorry, not the 14th of Yeah, March. when I don't they know play why I was reading that. Sri Lanka. Sri Lanka, yeah, that's going to be an interesting one. Because Sri Lanka has come close. I think generally they've done well to come close to winning. But every game, just like Pakistan, ek na ek cheez stops clicking and then suddenly they lose the game. And Australia is someone who's been out of form for so long as well. So either of those teams can win that. I think for me that's a 50-50. Yeah, no, I agree. I think this is Australia's chance to finally get some points on the board. I think they really need that game for the self-confidence because if they lose to Sri Lanka, bhai, I think Pakistan they might have trouble with Pakistan. I was gonna say Pakistan's gonna destroy them, लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगा. औकात से बाहर बात नहीं करनी चाहिए. But yeah, man, I think Australia really does need that game. I think it's gonna be a confidence booster game for them, or it's gonna be a confidence destroyer game. Like I said, it's a make or break game for Australia. So yeah, if they do well, I think Pakistan really does need to show up against Australia. I think Sri Lanka, though their batting lineup has been really strong, but I don't think their bowling lineup is going to be able to take on the Australian batting side, to be honest. I think most teams will be a little bit concerned about their net run rate as well, because if it comes down to it at the end, we've seen even in 2019, 2015, where most teams were fighting right at the end for net run rate. So even teams who are playing against weaker teams generally, I guess when we talk about England play against Afghanistan, when South Africa play against Netherlands in a few days' time as well, both of these games seem like very easy games for South Africa and England. From the way the table is looking like and with the way the table is forming, but at the same time both of these teams will try and make sure that they get the most out of this game. Perfect opportunity होती है आपके नेट रन रेट को एक बहुत हाई लेवल पे ले जाने की, जो कि आपको चाहिए होता है. एंड में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, they all end up on the same amount of points, and that's where net run rate comes in handy. And the last thing you want is you're missing out on a semi-final, your top 4 spot, because you didn't score enough runs against a weaker team. You didn't put up a fight in terms of bowling, and you were fine with just winning by 10 runs instead of 50 runs. So I think more than anything, all of these guys will be very important. By talking about a few of the injuries and a few of the issues or the breaking news that's been around cricket in the World Cup so far, Kane Williamson, big hit. हम लोगों ने last time बात करी थी कैसे he's recovered from his injury and he's come back in good form, but he's injured again. And the worst way you could get injured, run out. किसी ने run out throw के लिए ball मारी and it hits the thumb without the padding. So I think he's right-handed, so his left thumb doesn't have a padding on it, and that's the one that got hit, and so he's been ruled out of the World Cup, most likely ruled out until the semi-final, and will probably be back in November. So your thoughts on Kane and on New Zealand missing out on Kane Williamson? Yeah, I think that's a big thing for New Zealand. They've been doing very well without Kane Williamson, लेकिन I think Kane Williamson की कमी महसूस होगी. I think semi-final तक अगर आ जाए, so I think that might help them. But without Kane Williamson, I don't really see them winning the World Cup, especially the form that India's in right now and the form that Pakistan is going to be very soon. I don't see them. I don't see them. Yeah, I think they really do need Kane Williamson in the team. So that is very unfortunate way to go. Getting injured in your thumb, that's very weird. But yeah, I mean, hopefully he makes a quick recovery. Yeah, man, he's been so unlucky. वो जो पहली injury आप उससे recover करो, and suddenly second injury, and especially at such a crucial time, and especially when New Zealand looks so well organized right now, that everything's going so well without Kane Williamson, that when you think if you add Kane Williamson, it only gets better from there, and that's the kind of X factor they needed to cement their, I guess, chances for the World Cup. और वो एक बड़ा एक hit है उनके लिए. One big hit for Sri Lanka is that Dasun Shanaka has been ruled out of the World Cup, the whole tournament itself, and being the captain, the last thing you want is having your captain ruled out. तो भाई ये एक बहुत बड़ा blow होने वाला है श्रीलंका के लिए. वैसे ही वो लोग इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं,
You have your captain ruled out, and I know World Cup से पहले ही दो तीन उनके key players, bowlers, especially Hasaranga being one of them, जो ruled out as well in there. So somewhere you might just say कि भाई हाँ ठीक है, maybe Sri Lanka's chances for a World Cup or the top four are over here. Yeah, I think Sri Lanka, I think the captain also going out is a big blow for them. Same thing with the Kane Williamson thing. And I think Sri Lanka is already very dependent on a few players, Mendes or and what's Tanaka. exactly. So yeah, I think Mendes is gonna have to step up like he already has been. I think it's gonna be added pressure for him. But I think yeah, it's a very big blow for Sri Lanka. They're already not doing very well since the Asia Cup. I don't think they've recovered since the India game. उससे पहले बहुत अच्छा खेले थे, but of course you just need that one match where you get dominated for your confidence to go down. Let's see if that happens with Pakistan or not. Like, and yeah, I think that's a big blow for Sri Lanka as well. Yeah, obviously, by any player at this stage of the tournament, especially that someone who's been practicing for so long with you as well. So it does make a huge difference and something that a lot of teams will look at as well. Glad to see most of the players are still playing, and it'll be interesting to see how everyone else gets on as well. The World Cup is in full flow, games every single day. With that being said, I think that's most of the conversation we're going to have today. It was specifically focused on India Pakistan, but that's why that's the biggest event of the year, greatest rivalry between two teams. It's not really that big of a deal, to be honest. I think it's kind of Just another overhyping. game, gully cricket जैसा. Yeah, it was overhyping it a little bit. Exactly भाई. इतना स्कोर तो T20 में बनता है आजकल 191 192 अच्छा जो भाई, हो आज गया हो गया पाकिस्तान हो गया हो गया। फिर भाई हो गया बस इतना। सुबह के 4 बजे तेरी बातें सुनने नहीं आया मैं। मैं हो मैं गया। टिकटॉक के क्लिप सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ हाँ कौन सी क्लिप कट के डाल की जा सकती हाँ, है, तो मैं मेरे वो कर दिमाग रहा में वो था. गाना चल रहा है मेरो यहाँ भी। वही ऑन रिपीट चल रहा है। ब्लैक बैकग्राउंड, रेन कमिंग डाउन। हो गया भाई बस। और नहीं चाहिए। चलो यार देखते हैं, let's see what happens. भाई टूर्नामेंट में भी बहुत गेम्स बाकी है. We're not even halfway through the tournament, so it's very early to predict what's going to happen. Anything can change when Pakistan is introduced to new grounds, India is introduced to new grounds, and obviously when teams rotate around, that will also make a huge difference. So yeah, we'll see how it goes. We'll see how everything pans out. But in the meantime, भाई क्रिकेट अगर देखने हैं तो उसके साथ एनालिसिस और ये जो सब मजाक हंसी मजाक चलता है लोगों के बीच में, ये भी कर देखते रहो हम लोग के. Make sure you guys hit 200 views on this podcast. भाई मुझे 200 चाहिए. We've hit 100 in the last 5 podcasts in a row. Let's hit 200 on this one. Let's hit 25 likes on this podcast as well if we can do that. Make sure I'd you guys say I'd subscribe. say इस पॉडकास्ट को तो डिसलाइक करो। यू नो भाई इसकी कम सुना करो. इसकी इससे पाक. जो भी क्लिप्स पोस्ट करेगा मेरे नाम पे, मुझे टैग भी नहीं करता, इसकी क्लिप्स भी ना देखो। हेट कमेंट्स डालो इस बंदे पे, ठीक है? ये मेरा फायदा उठा रहा है। मैं इसको 4 बजे सुबह खींच के लाया हूँ पॉडकास्ट करने के लिए. But yeah, thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed. Make sure you leave a like rating. Make sure you subscribe. Make sure you add us to your playlist if you're listening on an audio platform. भाई बहुत हेल्प होती है हम लोग के एल्गोरिथम में. सोशल मीडिया पेजेस फॉलो कर लो. रोज उसमें रील्स आती है, रोज उसमें कंटेंट आता है, रोज उसमें ब्रेकिंग न्यूज आती है. ऑब्वियसली यूट्यूब में आप हर 5 मिनट में तो वीडियो नहीं ऐड कर सकते. एंड विद द वर्ल्ड कप देयर इज कांस्टेंट न्यूज कमिंग आउट, तो भाई उसके लिए बेस्ट होता है इंस्टाग्राम ट्विटर फॉलो कर लो जल्दी से जल्दी. एंड इन द मीन टाइम थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. थैंक यू अली फॉर बीइंग हियर एज वेल. I'll hope थैंक्स to see फॉर you soon. अगर सेमीफाइनल में इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे को खेलें, या इन द यार। फाइनल, या जब पाकिस्तान नॉकआउट होगा तब आई थिंक मुझे लाना चाहिए. तब अगली सही बार मजा मौका आएगा मौका तब. मौका मौका गाऊंगा मैं, स्पेसिफिकली तेरे लिए। But yeah, man, thanks for having me, man. It's been fun. Yeah, same likewise here. Thank you guys for watching, and we'll see you guys next time. Until then, stay safe.